Hello, Matujiman, and watching Northeast Express on HornbillTV. In a major counter-insurgency breakthrough, Assam police acting on a specific intelligence input and with support from central security agencies foiled an alleged terror plot by arresting 2 suspected active cadres of the banned ULFA independent outfit in Tinsukia district on Friday. The arrested members have been identified as Siyor Asom alias Human Jyoti Barua 27 and Manoj Ahom alias Papu Moran 30. According to police, both held the rank of self-styled second lieutenant within the insurgent organization. Security personnel recovered a significant cache of arms, ammunition and survival equipment from their possession. The seizure included 2 AK-56 assault rifles, 172 rounds of live ammunition, 2 hand grenades, medical supplies, syringes, opioid substances, jungle survival rations, backpacks and other military-style equipment. Preliminary investigation suggests that the duo had allegedly been assigned by Alpha Close Eye to carry out an indiscriminate attack on civilians in Tinsukia town to spread fear and create panic among the public. The Working Committee of the Joint Tribes Council Manipur, JTCM, has strongly condemned recent remarks allegedly made by Kuki Zo Council Chairman Haileng Thanglet, referring to Nagas as Kacha Naga, and has demanded an unconditional public apology along with the immediate arrest of those responsible for the killing of 6 Naga civilians. Addressing a press conference at the Manipur Press Club in Imphal, the committee described the use of the term as an insult to the identity and the dignity of the Naga community, alleging that it reflected either historical ignorance or a deliberate attempt to demean the Nagas. JTCM said the remarks had compounded the grief of the Naga community following the killing of 6 Naga civilians who were allegedly kidnapped on May 13 and whose bodies were recovered on June 10. The committee maintained that referring to the victims as Kacha Nagas while the community mourned their deaths was unacceptable. The committee said that while Thanglet had reportedly acknowledged the killing as a great mistake, such an admission was insufficient without accountability. It demanded an unconditional public apology, withdrawal of what it termed provocative remarks, and recognition of the dignity of Naga identity. JTCM also questioned the state and central security forces over the lack of arrest in the case and called for immediate action against those responsible. The committee said it would continue to pursue justice until all perpetrators are brought before the law. Nagas as a whole, and I would like to introduce all the leaders, clean and clear-hearted people who have been working for the cause of Jaleno Inkwi and Nagas as a whole, and in middle for the best interest of the peaceful coexistence to be brought in Manipur. I would like to introduce myself as K.C. Savio, co-convener of Joint Tribe Council Manipur, which represent Jemai, Liangmai. The Forum for Protection of Heritage for 23 Unsung Heroes Andaman Chapter 1891 has urged the government of Manipur and India to officially institutionalize Exile Day and include the biographies of the 23 Manipuri patriots exiled in the Andaman Islands after the Anglo-Manipur War in 1891 in school and university curricula. Addressing a press conference in Imphal, the forum said 23 patriots were sentenced to transportation for life to the Andaman Penal Settlement for defending the sovereignty of Manipur during the 1891 war. It alleged that the exiled freedom fighters endured severe hardships and harsh prison conditions, with many reportedly not allowed to return home even after completing their sentences. The forum expressed concern that the sacrifices of the 23 heroes remain largely absent from educational curricula and official commemoration, leaving many unaware of their contributions to Manipur's history. The organization called on the Manipur government to introduce their biographies in textbooks and declare Exile Day a state holiday with annual government-sponsored commemorative programs. It also appealed to scholars and researchers to undertake further study of the patriots' role in the Anglo-Manipur War, their experience in the Andaman Penal Colony, and the circumstances surrounding their exile. Forum President Chongtam Tompa Singh urged both the state and the central governments to take immediate steps to formally recognize and preserve the legacy of the 23 exiled Manipuri patriots for future generations. Many brave
heroes of Manipur were deported to the Andamans, and they were tried illegally, and these heroes fought for defending the sovereignty of Manipur. However, their names are forgotten. They are not remembered. They are not commemorated either by the government, neither by the government, nor by the people. So, what our forefathers, those heroes, have done is now sidelined. No one in Manipur as well as outside Manipur know them because their stories are not included in the educational syllabus, nor their commemorative functions are held. So we want to demand, we want to say the government of Manipur and the government of India to take up, say, actions or steps for organizing Exile Day. And this day to be declared as Exile Day, instead of holiday. We want to give a separate say, day for these exiled heroes. Search and rescue operations continue after a devastating cloudburst triggered a flash flood at the NEEPCO colony in Yazali, located in K.A. Panyor district in Arunachal Pradesh, causing widespread destruction and disrupting local lives, with 4 people still missing. According to the NEEPCO authority, almost all A-type quarters of the NEEPCO colony Yazali were damaged or washed away by flood waters on June 24. The flood waters washed away 5 persons, and later the district administration, with the help of locals, retrieved the body of a missing lady, but 4 others are still missing, and rescue teams and locals are engaged in search and rescue operations in the area. मेरा नाम तौतरा है। हम ये डिस्ट्रिक्ट का कीपन डिस्ट्रिक्ट का बीजेपी कार्यकर्ता है। अच्छा, ये बताइए कि उस दिन एक्चुअली क्या हुआ था? उस दिन एक्चुअली यहाँ पे करीब 7:30-8 बजे से में ये पानी निकल के ना, जो हम लोग का एक बाबी था वो आगे पे, तो उसको मतलब ले गया, मतलब और बहुत आदमी ले गया। काफ़ी आदमी यहाँ से मिसिंग हुआ है और बाकी को रेस्क्यू किया गया है। बाकी लोग सब, आधा लोग सब ठीक ही है, जो भी बोलने से ना। तो अभी भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हाँ। मिसिंग लोग हैं, उन लोगों का फाइंड आउट करने के लिए। हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। आज लगभग आज 3 दिन हो गया। 3 दिन में हम लोग जितना भी मतलब जो पोकलाइन लेके खुदाई किया ना, तो ज़्यादा सामान तो नहीं मिला है। आज ये जो आदमी, हम लोग का एक बाबी था, ताओ आजनी बोल के, उसका ताओ आजनी, उसका बैग मिला है। ये उसका फ़ोन भी मिला है। ये देखिए, फ़ोन और बैग मिला है। तो शायद उम्मीद है, मतलब उसमें वो जगह पे जो उधर खुदाई कर रहा है ना, मिलने का चांस भी है ना, तो इसलिए हम लोग उम्मीद का साथ काम कर रहा है। तो लगभग कितने आदमी अभी भी मिसिंग हैं? लगभग अभी 4 आदमी मिसिंग हैं। एक का तो बॉडी मिल गया। एक का बॉडी मिल गया। बाकी भारी नुकसान हुआ है यहाँ पर। हाँ, बहुत नुकसान तो हो गया। मचा दिया है। हाँ जी। तो अभी भी बारिश हो रहे हैं। हाँ। तो लोगों के मन में और भी डर है इस बात को लेकर। वो तो बहुत ही मतलब घटना तो बहुत ही पानी तो भयानक यहाँ दिया हुआ है ना, तो इसके लिए आदमी तो अभी भी अंदर में दिल दिमाग में मतलब सदमा होके बैठेगा, डर बैठेगा, पैदा करके बैठेगा। तो उसके लिए मतलब उस माहौल को मतलब आदमी लोग तो फर्स्ट टाइम देखा है ना ये भयानक हादसा को। तो पहले तो ऐसा तो नहीं था, मतलब कि देखा भी नहीं इतना भयानक। ऐसा तो यहाँ पर तो हुआ ही। पहले मतलब मेरा फोर फादर्स पिताजी का पिताजी बोला था, मतलब 50 साल आगे एक बार गया था, मतलब इसी तरह। तो उसी तरह ये भी उस समय का 50 साल पीछे आ गया होगा शायद। 50 साल बाद हाँ, आ गया होगा। अच्छा
ऐसा हादसा हो गया। उस दिन हम था घर में और पानी उधर नाला से बहुत आवाज़ दे रहा था। तब हम उठ के देखा है तो पूरा वो ब्रिज का ऊपर में पानी आ रहा है और उस तरफ आते समय हम मेरा फैमिली को जगाया। उसका बाद जगा के और दूसरा घर में मेरा नेक्स्ट पार्ट में एक आधी लड़का था और सो रहा था होगा, कोई लाइन तो नहीं है, दरवाजा को हटाता के हम चला गया। दूसरा घर में वो एक पाविन, उसका घर को भी हम दरवाजा को मार के पानी आ रहा है जल्दी भागो बोल के हम निकल गया। और दूसरा एक बिहारी सिक्योरिटी था, उसका घर में भी हम दरवाजा को मार के निकल। मेरा सामान को मतलब ध्यान नहीं दिया है तो उन लोग को उतारा। उसका बाद पानी ज़्यादा आ गया, हम मेरा गाड़ी को निकल के बेटी लोग को लेके चला गया था। अभी निप्को में हाँ, नेपको में काम करता है। आपका मतलब आप क्वार्टर में रहे? हाँ, क्वार्टर में मेरा क्वार्टर। आपके अगल बगल में कितनी फैमिलीज अफेक्ट हुए हैं, कितना घर टूटा हुआ है? कम से कम अगल बगल में तो 20 जैसा घर चला गया। क्वार्टर पूरा चला गया तो ले गया। 20 जैसा क्वार्टर है। पांच आदमी मिसिंग थे तो उसमें से एक लेडी का बॉडी मिला है। हाँ, वो भी बाकी 4 लोगों का वो 4 लोगों का तो पता ही नहीं हम क्या हो गया। जितने भी सामान थे सब कुछ डैमेज हो गया, सब हाँ, मेरा भी तो सब चला गया, सब ले गया है, कुछ भी नहीं है अभी। सिर्फ आदमी, सिर्फ बच्चा है, वही है। मेरा शुभ नाम जो श्री अताऊ मिजियो जी। ये बताइए कि आपके कोई फैमिली मेंबर्स अभी भी मिसिंग है क्या? जी, फैमिली मेम्बर्स मीन्स मेरा दीदी है जो ताऊ अजनी, मेरा 3rd नंबर वाला दीदी थे। तो आज तक हम लोग सर्च किया है, अब तक कुछ भी नहीं पाया है। मतलब वो निप्को में वो एम्प्लॉय थे? नहीं, नेपको में एम्प्लॉय नहीं था। एक्चुअली क्या हुआ, वो जो उसका हस्बैंड जो पहले नेपको का एम्प्लॉय था तो वो गुजर गया है। तो गुजरने का वजह से यहाँ में क्वार्टर में बैठा है वो कुछ साल से, क्योंकि यहाँ में मतलब ये नहीं था, घर नहीं था, इसलिए वो यहाँ बैठा है। मतलब जिस क्वार्टर में वो रह रहे थे उस क्वार्टर को ही बहा कर ले गया ना? हाँ, पानी ने उस क्वार्टर को बहा कर ले गया है। उनका कोई बेटा बेटी? हाँ, उसका एक बेटा था और उसका ट्विंस बेटी थे 2। तो उस दिन का जब बाहर जब आया था उसी समय में एक बेटा और बेटी दोनों को बहा के ले गया। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली दोनों का जो मतलब ऐसे था कि आराम से मतलब एक तो निकल गया है और एक को बहा के ले गया और नीचे तक, तो उसको भी लोग ने बचा लिया है। तो अभी सेफली घर में फैमिली मेंबर ने पहुंचा के रखा है। मतलब उनका बेटा को भी बहा कर ले गया था लेकिन लोगों ने बचाया? जी, खुद से बच के निकल गया है वो बेटा जो, क्योंकि अभी क्लास 12 पास हो चुका है, थोड़ा जवान हो गया है लड़का जो, तो अपना से बच के निकल गया है बाहर से। आपकी दीदी अभी भी लापता? जी, मेरा दीदी अभी तक भी लापता है। तो मैं जितना भी रेस्क्यू ऑपरेशन लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द उसका बॉडी को पा सकने के लिए। थैंक यू सो मच। Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma on Friday attended the 110th Foundation Day celebrations of Sri Marwari Databhya Ayusha Dalaya in Guwahati and hailed the institution for its contribution to healthcare and social service in the state. On the occasion, Sarma conferred the Lifetime Achievement Award on Dr. Nomal Chandra Barwa, unveiled a commemorative souvenir and felicitated doctors and healthcare professionals for their long-standing service at Marwari hospitals. Speaking on the occasion, Chief Minister Sharma described Sri Marwari Databhya Ayusha Dalaya as a shining example of humanity, compassion and selfless social service. He said its sister institution Marwari Hospitals has set a notable benchmark in healthcare by providing quality medical treatment to the poor and the common people. The Chief Minister observed that during his tenure as Assam
Assam's health minister amid the COVID-19 pandemic. He had witnessed the institution's significant contribution in addressing the public health crisis. পুনৰ এবাৰ এই চিকিৎসালয়খনত নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰা প্ৰতিগৰাকী চিকিৎসক, নাৰ্ছ, পেৰামেডিক্স, কৰ্মচাৰী যিসকল অৱসৰ পালে তেওঁলোকক আৰু যিসকলে কাম কৰি আছে তেওঁলোককো মই পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। আমাৰ স্বাস্থ্য সেৱা आसाम की जो चिकित्सा का जो आज का दिन में हमारे जो परिवेश है हम लोग बहुत बड़ा कामयाबी हासिल किया हो और आज आसाम के जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है ये देश का सबसे एफिशिएंट पब्लिक हेल्थ सिस्टम में गिना जाता है। अभी अभी हमारे एसआरएस का बुलेटिन पब्लिश हुआ 2022-2023 का और साथ में एनएफएसएस 6 का भी रिपोर्ट हमारे सामने आया। 2006 में जब मैं आसाम के स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा लिया था वो समय आसाम की मैटरनल मॉर्टेलिटी प्रति लाख में 490 रहा किया था। आसाम सबसे नीचे थे और आसाम के घंटी नीचे से शुरू होते हैं और नेशनल हेल्थ इंडिकेटर से हम 300 पॉइंट नीचे थे। लेकिन अभी जो एसआरएस 22-23 आए हम 490 से इंप्रूव करते करते 84 तक पहुंचा। देश का 10 नंबर पोजीशन तक हम आने में कामयाब हुए और नेशनल इंडिकेटर 88 से अभी हम 4 अंक नीचे आने का काम किया हूं। मतलब Tipo, a premium bottled version of Assam's traditional Poro Apong, was officially launched in Guwahati with the aim of taking the missing community's centuries-old rice wine to national and international markets. The initiative blends traditional brewing practices with modern food science to preserve standardized and commercially market Poro Apong while creating sustainable livelihoods for missing women. Currently, the company works with 2 women-led self-help groups from Silapatar and Jonai with plans to expand production and marketing. Co-founders Dr. Dipankar Kalita and Abhijit said, patent preservation technology has enabled the traditional beverage to achieve a shelf life of over 4 years without compromising its authenticity or quality. They expressed confidence that Tipo could position Assam's indigenous rice wine alongside globally recognized beverages. Wine expert Ajay R. Shaw highlighted that the project maintains traditional brewing methods while ensuring hygiene, quality, consistency, and commercial viability. Women artisans associated with the initiative said the partnership has improved their household incomes and created new opportunities while helping preserve the missing community's rich cultural heritage. The launch concluded with the formal unveiling of Tipo and a musical performance by Assamese musician Joy Barua, marking a significant milestone in promoting Assam's indigenous food and beverage heritage on the global stage. On fermentation day, rice is cooked. At the same time, rice husk is burned, not aggressively, but carefully, to create name was given by Abhijit's mother,
and we were brainstorming and trying to find out what is the best name for our brand. So then Abhijit's mother helped that, call it Tupo. Why? Because the name in missing means if you drink something very nice and you feel really, really happy, and in missing language you say Tupo, only for drinking, not for eating. It's the specific word for drinking something that makes you very happy. That's how the name came. At present, we have not gone to the market, so we are working only with 2 self-help groups. First is Ardha from Membersuk, Silapathar. Second is Polo SSG from Jonai. So each of these 2 groups contains of 20 women. I think you have met them. Yes. After that, there are a few people who transfers this to our pilot project in Guwahati. In Guwahati, there are around 5 to 6 people who helps in further processing this drink. And now we are further employing few more people who can go and do the marketing for us. तो बहुत अच्छा लग रहा है जो हम लोग बनाना, हम लोग का ट्रेडिशनल जो आबोंग है, हम लोग इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय वो बाजार में हम लोग का ये लॉन्च आज तो लॉन्च हो गया, जाने वाला है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। और मोदी जी भी बोलता है कि हम लोग महिला सबलीकरण हो, तो हम लोग कोई दूसरा सोच रहा है, तो हम लोग ये वाला हम लोग का खुद का ट्रेडिशनल हम लोगों ने सोच कर, हम लोग का एसएचजी गुड है, हम लोग एक साथ मिलकर बनाता है। और अभी जो इधर हम लोग का वो सार लोग जो है वो लोग भी बहुत से हेल्प किया है। और जो वो हम लोग बनाता है वो पत्ता मतलब मेडिसिन का ही पत्ता है, सब 50-60 के एबव आता है। ये सब हम लोग आसपास से भी कलेक्ट करता है, और ज़्यादा चाहिए होता तो हम लोग वो फॉरेस्ट एरिया में जाता है, पास के फॉरेस्ट एरिया में, वहाँ उधर से कलेक्ट करके हम लोग वो बनाता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो अभी बना रही हूँ, हम लोग का जो मेहनती है, ये हम लोग ये बना के हम लोग का बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हम लोग को महिला का बहुत आजकल तो जानता ही है कितना महंगा हो गया। और मेरा हस्बैंड को, मेरा परिवार को, मेरा लड़का लड़की को, ये लोग को ये बना के अभी हम लोग ये करके, हम लोग को तो कंपनी पैसा देता है, आत्मा कंपनी देता है पैसा, वही पैसा से हम लोग अभी थोड़ा ये लाभ हो रहा है। Traditional drink of the missing community of Assam. They've been brewing this for millenniums, I mean years and thousands of years, and it has never occurred to solve the problem of bottling and preservation and standardization, right? So this challenge was existing in this drink as well, just like any other drink of no taste. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.